गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 1 जिसको न्यूट्रिशन इन एनिमल हम लोग स्टडी करेंगे। तो एक मिनट स्टूडेंट्स निकाल दे। तो स्टूडेंट्स न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हम लोग को कुछ बात सबसे पहले ध्यान देना है। पहला बात तो ये कि न्यूट्रिशन क्या है और दूसरा ये कि न्यूट्रिएंट क्या है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, न्यूट्रिशन हम लोग क्या पढ़े न्यूट्रिशन बताइए। न्यूट्रिशन बोलते हैं कि द प्रोसेस इन विच यूटिलाइजेशन ऑफ फूड inside the body for the energy that is called the nutrition। मतलब क्या, फूड को अपने बॉडी में यूटिलाइज करना, किस लिए? एनर्जी के लिए, वो कहलाता है न्यूट्रिशन। और जिस सब्सटेंस को हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड अ न्यूट्रिएंट। स्टूडेंट्स यहां कुछ बात में डिफरेंट है, ध्यान देना हम लोग को कि अगर कोई आपसे बात करे राइस के बारे में तो राइस इज अ न्यूट्रिशन, बट विच न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन राइस? दैट इज कॉल्ड अ कार्बोहाइड्रेट। द कार्बोहाइड्रेट इज अ न्यूट्रिएंट। स्टूडेंट्स पोटैटो इज अ न्यूट्रिशन बट कार्बोहाइड्रेट इज अ न्यूट्रिएंट। दाल इज अ न्यूट्रिशन बट विच न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन दाल? दैट इज कॉल्ड प्रोटीन। द प्रोटीन इज अ न्यूट्रिएंट। मतलब जिस चीज को हम जान रहे हैं वो न्यूट्रिशन है और जो उसमें छुपा हुआ है दैट इज कॉल्ड अ न्यूट्रिएंट। याद रखना है। इसी न्यूट्रिशन को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया था। एक हमारा आता था ऑटोट्रॉफी और एक होता था हमारा हेटेरोट्रॉफी। स्टूडेंट्स आज जो हम लोग को पढ़ना वो प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स प्लांट्स में भी ऑटोट्रॉफी और हेटेरोट्रॉफी होता है और प्लांट ही ऑटोट्रॉफी। कुछ प्लांट ऐसे जो हेटेरोट्रॉफी है, लेकिन मैक्सिमम प्लांट जो हमारे वो ऑटोट्रॉफिक कैटेगरी में आते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ऑटोट्रॉफी यहां भी दो वर्ड है, ध्यान दीजिएगा अगर दिखेगा तो। एक इसमें होता है स्टूडेंट्स ऑटो और दूसरा होता है ट्रॉफिक। दिख रहा है स्टूडेंट्स? ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा होगा। तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफी का मतलब होता है न्यूट्रिशन। मतलब जो अपना फूड खुद से बनाए दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफी। जो अपना खाना खुद से बनाए उसको स्टूडेंट्स हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफी बोलेंगे। यानी ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफी। स्टूडेंट्स यहाँ एक बात समझने वाली है कि ऑटोट्रॉफी जो है वो ठीक है, वो ऑटोट्रॉफी है जो अपने से खाना बना, किस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखना है कि प्लांट जिस प्रोसेस से अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड that is called a photosynthesis process। this is called a photosynthesis। स्टूडेंट्स ये बहुत याद रखने वाली बात है। the process in which plant prepare their food that is called a photosynthesis process। clear है स्टूडेंट्स? दूसरी बात है कि what is heterotrophy? तो the opposite साइंस स्टूडेंट से ही है, बाय गेट वन गेट फ्री। साइंस में अगर एक डेफिनेशन याद कीजिए दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे ऑटोट्रॉफी हम लोग समझ गए कि जो अपने से खाना बनाया, प्लांट प्रिपेयर द ओन फूड दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफी। बट हेटेरोट्रॉफी में ठीक उल्टा कर दीजिए, नॉट लगा दीजिए। द प्लांट विच कैन नॉट डज नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफी। क्लियर है भाई? सिंपल भाषा में जो अपने से खाना बनाएगा ऑटोट्रॉफी, नहीं बनाएगा हेटेरोट्रॉफी कहलाएगा। समझ रहे? दूसरी बात है, प्लांट जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ले रहा है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में
कितने सब्सटेंस का जरूरत पड़ता है ये पूरे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं, हाउ मेनी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ फोटोसिंथेसिस, हाउ मेनी रॉ मटेरियल। तो स्टूडेंट्स याद रखना है देयर आर 4 रॉ मटेरियल। कितना? 4। कौन कौन? तो पहला कोई पूछे तो बोलिएगा सनलाइट, सेकंड कोई पूछे आपसे तो क्लोरोफिल, थर्ड कोई पूछ दे आपसे तो क्या बोलिएगा? वाटर, फोर्थ कोई पूछ दे आपसे कि चौथा क्या है तो सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल हो गया, वाटर हो गया। अब क्या बच गया इसमें? बोलिए। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड है जो इसमें रिक्वायर्ड होता है। तो ये 4 रॉ मटेरियल है जिससे फोटोसिंथेसिस, अगर ये 4 में से कोई भी एक नहीं हो तो हो सके कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमारा ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद याद रखिएगा कि सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है। जितना भी फोटोसिंथेसिस में है सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब इसी में स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं अगर हेटरोट्रॉफी का। किसका स्टूडेंट्स? हेटरोट्रॉफी का बात करते हैं। ये तो रहा ऑटोट्रॉफी के बारे में। ठीक है, हेटरोट्रॉफी का क्या बोले कि वैसा प्लांट जो अपने से फूड डिपेंड नहीं करेगा वो कहलाएगा हेटरोट्रॉफी। हेटरोट्रॉफी प्लांट में कौन कौन आते हैं, ये क्या क्या हो सकता है हेटरोट्रॉफी में स्टूडेंट्स? तो पहला याद रखना है कि हेटरोट्रॉफी में एक होगा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं कि द न्यूट्रिशन विच ऑब्टेन देयर फूड। हम बताएं यहाँ ऑब्टेन क्यों बोले स्टूडेंट? एक बात क्लियर है, प्रिपेयर और ऑब्टेन में अंतर होता है। प्रिपेयर मतलब बनाना, मतलब अपने से बना रहे, ऑब्टेन में प्राप्त करना, कहीं से ले रहे हैं। समझ रहे? तो यहाँ ऑब्टेन होगा। तो सेप्रोफाइटिक का क्या डिफिनेशन हो सकता है? द प्लांट विच प्रिपेयर देयर, द प्लांट विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस। जो सड़े गले पदार्थ से अपना फूड को लेगा वो कहलाएगा हमारा सेप्रोफाइटिक। ठीक है स्टूडेंट्स, एक आता है स्टूडेंट्स में पैरासाइटिक। पैरासाइटिक किसको बोलते हैं? द प्लांट विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट और एनिमल्स विदाउट किलिंग इट, बिना उसको मारे हुए जो अपना फूड खुद से ले रहा है वो कहलाएगा हमारा क्या? पैरासाइटिक। ठीक है स्टूडेंट्स, एक आता है स्टूडेंट्स में सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफी का सिम्बायोटिक मतलब, सिम्बायोटिक बोलते हैं द प्लांट विच ऑब्टेन देयर फूड बाय द हेल्प ऑफ अदर प्लांट्स। जो दूसरे प्लांट्स अपना फूड को ले रहे हैं, दूसरे के सपोर्ट से ले रहा है वो फूड अपना, वो कहलाता है सिम्बायोटिक। एक होता है हेटरोट्रॉफी स्टूडेंट इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये भी हेटरोट्रॉफी में ही आता है। इंसेक्टिवोरस किसको बोलते हैं? प्लांट विच ऑब्टेन देयर फूड बाय किलिंग ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट को मार के जो अपना खाना लेगा वो कहलाएगा इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो स्टूडेंट्स ये सब जो है यही हमारा किसके कैटेगरी में आता है? हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट की कैटेगरी में आता है। आप बुक को स्टडी कीजिएगा, अभी वीडियो में इसको प्ले कर रहे हैं, आप इसको देखिए, वीडियो को बुक स्टडी कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, क्वेश्चन स्टूडेंट अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आएगा तो आप फोन कीजिएगा, समय देंगे और बनाएंगे। ठीक है, देखिए वीडियो। We get this energy from the food that we eat. So we can say that nutrition is a process by which all living organisms take food and utilize it to get energy. Both animals and plants are living organisms. Like animals, plants also require energy for their life activity. Thus, nutrition is an important life process of all living organisms. Objectives. At the end of this lesson, you'll be able to define nutrition, describe autotrophic mode of nutrition in plants, explain the process of photosynthesis, describe heterotrophic mode of nutrition in plants, explain the different types of heterotrophic mode of nutrition. Dear friends, now let's know about the mode of nutrition. There are two types of nutrition modes, autotrophic
autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. But what are they? The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic nutrition, and these organisms called autotrophs. Green plants are the examples of autotrophs. The mode of nutrition in which animals and many other organisms take in ready-made food prepared by the plants is called heterotrophic, and these organisms are called heterotrophs. Human, lion, tiger, etc. are the examples of heterotrophs. As we know that green plants synthesize their own food. But do you also know that how they synthesize their own food? Actually, green plants make their own food by the process of photosynthesis. Photosynthesis is a process by which green plants synthesize their own food from the carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and solar energy. Now you know that in plants, water, minerals and carbon dioxide are raw materials for the synthesis of food. Do you also know that how do plants obtain these raw materials from the surroundings? And how do they transport them to the food factories of the plant? Water and dissolved minerals are absorbed directly from the soil through roots and sent to the leaves by the means of many small vessels present in the stem. These vessels run throughout the root, the stem, the branches and the leaves. They form a continuous path or passage for water and minerals to reach the leaf. Likewise, carbon dioxide from air is taken in through the tiny or small pores present on both surfaces of the leaves. Such pores are called stomata. These pores are surrounded by guard cells. After reaching to the leaf, carbon dioxide and water react in the presence of sunlight to form carbohydrate. The carbohydrate ultimately converted into the starch, which gets stored in the different parts of the plant. Therefore, the first food product is formed during the photosynthesis is starch. Starch is also an example of carbohydrate. In this process, oxygen is also released. Therefore, the process of photosynthesis can be represented as carbon dioxide plus water in the presence of chlorophyll and sunlight gives carbohydrate plus oxygen. In the presence of sunlight, carbon dioxide and water gives carbohydrate and oxygen releases in this process. Till now we have learnt about the photosynthesis process, but now the question is, what is its significance? Photosynthesis is an important and vital process for life on this planet. This process helps in the conversion of solar energy into organic matter. Hence, photosynthesis links the physical and biological world. It is the primary source of organic food for all living forms, either directly or indirectly. It also helps in purifying air and maintaining the balance of oxygen and carbon dioxide in the ecosystem. Friends, now it's time to have some fun. Just check your understanding by clicking on true or false button. Friends, now let us know about those plants which do not have chlorophyll and cannot synthesize their food on their own. Just think about how do they survive and from where do they derive nutrients.
As we have already learnt in this module that these plants derive food from other plants and animals, and this type of mode of nutrition is called heterotrophic mode of nutrition. The plants in which this kind of mode of nutrition is found are known as heterotrophs. There are 4 types of heterotrophic plants: parasitic plants, saprophytic plants, symbiotic plants, insectivorous plants. Now let's learn them one by one in detail. Let's start with parasitic plants. The plants which obtain their food directly from other plants are known as parasitic plants, and those plants from which they obtain food are known as host. You might have seen Kaskata, Amarbe, nearby you, which is an example of a parasitic plant. It coils around the stem and branches as a yellow tubular structure. You'll be surprised to know that it does not contain chlorophyll, so it takes ready-made food from the plant on which it is climbing. The plant on which it climbs is called a host. When you go to a vegetable shop, you might have seen packets of mushrooms sold in it. Besides that, sometimes you may have also seen fluffy umbrella-like patches growing on rooting wood during rainy season. But do you know what these organisms are and how they get their nutrition? Friends, these organisms are commonly called fungi, and they get their nutrition from dead and decaying matter. To get their nutrients from dead and decaying matter, they secrete digestive juice and convert it into a solution. This mode of nutrition, in which organisms take in nutrients in solution from dead and decaying matter, is called saprotrophic nutrition. And organisms which use this kind of mode of nutrition are called saprotrophs. Thus, we can say that fungi are saprotrophs. Friends, like us, plants also require a lot of nitrogen to make proteins. So they absorb nitrogen continuously from the soil, due to which the amount of nitrogen becomes deficient. As you all know, that there is 78% of nitrogen present in our atmosphere, but plants cannot use it in the manner directly as they can use carbon dioxide. They require nitrogen in soluble form. The bacterium called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a soluble form. These bacteria live in the roots of gram, peas, mung beans, and other legumes and provide them with nitrogen. In return, the plants provide food and shelter to the bacteria. Thus, we can say that rhizobium shows a symbiotic relationship. Friends, now it's time to have some fun. Just check your understanding by matching the followings. Summary. Let us summarize what we have learned. The process by which all living organisms take food and utilize it to get energy is called nutrition. Plants obtain their food by 2 modes, autotrophic and heterotrophic nutrition. In autotrophic mode of nutrition, plants synthesize their own food by the photosynthesis process and are called autotrophs. Photosynthesis is a process by which green plants synthesize their own food from carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight. In heterotrophic mode of nutrition, plants do not synthesize their own food, but directly depend on other plants and are called heterotrophs. Parasitic plants obtain their own food directly from other plants, which are known as hosts. The mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter
is called saprophytic nutrition. Lichen is a specific group of plants in which both algae and fungi live together. This is called symbiotic relationship. Insectivorous plants can synthesize their own food, but they fulfill their nitrogen requirement by trapping or eating the small insects. For example, Nepenthes, pitcher plant, Drosera, etc. Introduction.